Students, this is where we stand. Okay, so we have completed the. Why are we not bringing this down? We have completed the module bacterial genetics, which, and the reason I show you all this is if you have a doubt whether we have not covered a particular topic, we can take it up, or you want to discuss something in detail, we can take it up. Like I said, the only topic left is assimilation of nitrogen from the earlier module, which we will take up in the bacterial metabolism. And bacterial metabolism may we are really covering a very limited number of pathways. So, and then it's only microbial pathogenicity. I don't know why we cannot see that. Let's, yeah. So this is the only topic which is remaining, microbial pathogenicity. Like I said, in the next 3-4 lectures, we're going to cover this up. So metabolism, if you see, we have these three processes: fermentation, aerobic, anaerobic, and then you have, this is for heterotrophs, and then you go to autotrophs, phototrophic microorganisms, chemolithotrophy, and EG pathway. That is all that we need to cover. Okay. So, yes. In our earlier lecture, we have on bacterial nutrition, if you remember, we have covered the various grouping based on an organism's requirements for different sources of energy for carbon and electrons. So if you remember those prefixes and suffixes, auto, hetero, litho, chemo, and all that. In the biochemistry class, you will be studying some of these pathways. Now, the idea of including it in microbiology is to basically apprise you of the metabolic diversity that exists in microorganisms. The prokaryotes, besides exhibiting the pathways of metabolism found in eukaryotes, they have the ability to in fact perform several other types of energy generating metabolism that are absent in higher organisms, or for that matter even eukaryotic cells. So the diversity of prokaryotes, which till now you have been talking about, we have been talking about, has been restricted to different cell shapes, cell types, and sizes. But the idea of introducing this module is to tell you how the metabolic potential is also diverse in microorganisms. And in fact, another field that actually for the success of prokaryotes in variety of niches. So as a student of biochemical engineering and biotechnology, understanding the metabolism is important for you, especially in today's world of turning to sustainability. So you get an idea of the contribution of microorganisms to various biogeochemical cycles at the global scale. Then various metabolic processes hold application in industries, as you can imagine, and also to understand host pathogen interaction. And then once you have an understanding of the metabolism, you can devise strategies accordingly for either modifying the processes or using it to our benefit. So what I'm going to do is I'm going to give you first an outline of what metabolism is and what is the part that I'm going to cover. Now, there is this inbuilt thought process that when you're talking about biochemical pathways and biochemistry, you're going to you need to memorize a lot. It is, you will see that it's actually not true, especially because right now you are going through enzymes. So I would want you to understand the logic behind each step and the philosophy of the pathway, and then you will realize that it is not mugging up. Okay. Once you understand what is the purpose that this particular pathway is running in a cell, it will be very easy for you to sequentially understand each process. Okay. So stop me again. I'm repeating myself. Stop me when you don't understand a particular thing. And this is also true for all the pathways that you're going to cover in biochemistry. So you can always ask the coordinator to explain why a particular thing is happening. Only then it will be, it should. With that background, the term metabolism, you must be knowing this, it is actually a sum total of all biochemical reactions required for generation of energy as well as synthesis of macromolecules. This is the entire
set of biochemical reactions that take place in a cell. So basically, it's a summation of catabolism plus anabolism. And when I say catabolism, it is actually energy yielding metabolism, catabolism. You break down compounds so that energy is generated, and then this energy which is generated is utilized for anabolism, which is biosynthetic metabolism. So cell would take up complex molecules, break it down into some simpler molecules, generate energy, and then use that energy as well as the simpler compounds to synthesize the various biopolymers, various intermediates required for the cells requirement, various precursor pools, and even nutrients. Okay. Our focus in this module is going to be only energy generation. So we are not going to take up anabolism. It's just about how a cell generates energy, okay, how it breaks down various substrate. This is the focus for our lecture in microbiology. And of course, this is something that you're aware of. The biological reactions, they are in metabolism, they are broadly of these types. So you can have oxidation reduction, you can have ligations, isomerization, group transfers. There can be hydrolytic reactions by the addition of water, or there could even be carbon bond cleavage by means other than hydrolysis, hence it's mentioned here. So we are going to come across all these reactions in the pathways that we're going to cover. Now, this you all are aware of, right? That when you talk of energy, whenever I say energy is being generated or a source, this is an energy source, what we actually mean is the production of or synthesis of ATP, which is the energy currency. I don't know if you've ever given this a thought, if it's only ATP out of the other nucleotides, or maybe you were you talked about this in biochemistry. I'm not sure. So have you thought about it? Why there are other nucleotides which are not used, and why is it only ATP which is a energy currency, students? कोई भी? बताओ दीपक जहांगीर, तुम लोग ने एटीपी वगैरह तो पढ़ा है ना दीपक? Because ma'am, during the energy consumption, these phosphate bonds are broken, so that produce a large amount of energy to again form and break covalent bonds or non-covalent bonds. That's why. हाँ दीपक, दैट आई अंडरस्टैंड. वो तो ये तुम्हें पता है कि हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं इसलिए वो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड क्यों, मतलब यूटीपी ट्राइन्यूक्लियोटाइड क्यों, एडेनोसिन ट्राइन्यूक्लियो, क्या बोल रहे हैं, व्हाई नॉट यूटीपी जीटीपी सीटीपी टीटीपी, ये कह रहे हैं हम. इज इट ओनली एटीपी व्हिच हैज दीस हाई एनर्जी बॉन्ड्स? No ma'am. ये जो Because ट्राइफॉस्फेट है ये तो तीनों में सब में है ना, टीटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूटीपी जीटीपी सब में है, तो व्हाई yes ओनली ma'am. एटीपी, ये कभी सोचा है? कोई और, एनीबडी एल्स? नहीं सोचा है तो सोचो और देख लेना एक बार जरा नेट पे तुम लोग, और मुझे नेक्स्ट टाइम बताना कि क्या रीजन है कि व्हाई डू वी कंसिडर ओनली एटीपी. इज इट बिकॉज द अदर्स do not yield similar kind of energy? ATP has the highest when we talk about a comparative number, a quantitative number. मैम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से मोस्ट प्रोबब्ली लाइक, देखो जो मेरे लिए कंसर्न का है वो ये है, राइट, ये पता है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप्स है हमारे लिए. बट लाइक मतलब in the processes that ATP takes part in, it might be easier to do it with an adenine residue rather than the residue of any other pyrimidine or purine. Because of its structure. So I would actually want you all to go back and study. अभी नहीं, जब class खत्म हो जाएगा तब, and in the next class we can discuss it. Why is it always ATP? ठीक है. Now जैसे उन्होंने बोला, hydrolysis of ATP it's a highly exergonic process, and being highly exergonic, it drives many otherwise endogonic processes.
that would be unfavorable without the coupling of energy. So energy coupling is one means by which ATP drives the reaction. So for example, glutamic acid and ammonia, if you would like to aminate glutamic acid and form glutamine, the delta G0 is plus 3.4 kilocalorie per mole. However, the delta G for hydrolysis of ATP is like minus 7.3 kilocalories. So a coupled reaction would have an overall delta G negative, minus 3.9. So hence this is the prime mechanism by which it can drive reactions. But what is actually happening here is ATP can phosphorylate other molecules. So once it phosphorylates other molecules, it is also another mechanism by which ATP functions. What it does is it destabilizes the molecule or makes it more active. Okay, so phosphorylation makes it more reactive, such that then the ammonia displaces the phosphate group, forming glutamine. तो एनर्जी कपलिंग के साथ ये भी इसका मैकेनिज्म है कि दिस इज हाउ इट just adding this P group destabilizes, and later you will realize that this is a principle that is observed in other reactions as well. Okay, so तो monomers को for example ये destabilize कर सकता है so that they react to form polymers. This is commonly observed. Now what I want to point out is that while ATP is an efficient energy donor, it is not a good energy storage molecule. Okay, so because it's too reactive and it easily transfers its pi, it is not considered to be a good entity for storage. So cells storage is in the form of carbohydrates or fats. Okay, ATP is not used for is not stored for this purpose. Now another important thing is other than ATP, there are several high energy. Now forget about GTP, UTP, baki jo triphosphates the. Even if you look at the cells, the other proteins and other compounds that are found, you will see that ATP, there are many other compounds which have several high energy molecules, especially phosphorylated compounds and even thioesters, which have a free energy of hydrolysis much higher. So you see this is ATP and you have molecules which have much higher free energy of hydrolysis. So again, I would ask you to actually find out why then is ATP the choice for energy currency. तो एक तो question था कि why amongst the 4-5 nucleotides is ATP the choice of energy currency, and here when I show you this scale, I would like you to find out why ATP, why not something higher than ATP. Okay, and I would also like you to make a note of phosphoenol pyruvate and 1,3-bisphosphoglycerate, which we will require in the next slides in the pathways that we cover. Okay. So do you know how ATP is generated, students? Anybody? ATP must have been covered, right? In your biochemistry thing. Have you studied ATP, NADH, FADH2s? Have you covered all these? No, ma'am. ATP का काफी मतलब बेसिक ही बताया था न्यूक्लिक एसिड्स के साथ. बेसिक में क्या बताया था? कैसे जनरेट पता है? नहीं, वो नहीं बताया था. अच्छा, ठीक है. तो when I'm covering these pathways, students, my idea is not to take it up from the biochemistry perspective. So I will not be really going into how the enzyme functions, how is it regulated or stuff. For me, it is more important to tell you as a holistic picture why a pathway takes place. Okay. तो हम तुम्हें अभी बेसिक्स देंगे, जितना मुझे समझाना है अपने पाथवेज के लिए उतना हम तुम्हें डेफिनेटली बताएंगे. There are two ways in which ATP can be generated. Okay, for a typical cell, a heterotrophic cell, a bacteria, you know, heterotrophy is very common in a bacteria. There are two ways in which ATP can be generated. One is called as substrate level phosphorylation. So basically phosphorylation होता है, AMP, ADP का phosphorylation होता है जिससे कि वो ATP generate करता है. This phosphorylation could be either substrate level or the other means is by oxidative phosphorylation. ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा. The more complex one, of course, is oxidative, but this is also the one which is most important in terms of the amount of ATP generated by the process. So substrate level से एक minor fraction of ATP generate होता है खाली. हाँ. And in cells which are photosynthesizing, photo term से ही समझ में आ रहा है तुम्हें,
there is a process called as photophosphorylation. Phosphorylation, which is mediated by light. Okay, this is very much in parallel to the process of oxidative phosphorylation. Of course, this is also a major pathway in photosynthetic organisms. But ये हम लोग जब photo autotrophy वगैरह पढ़ेंगे तब we will talk about photophosphorylation. Now, substrate level phosphorylation में क्या होता है? Here there is a direct transfer of a high energy phosphate group from a metabolic intermediate or a substrate to a molecule of ADP. Okay, so a P is transferred, for example, this is the substrate, so the P is directly transferred to ADP to form ATP. And here, of course, you understand that the substrate needs to have a higher potential of free energy of hydrolysis than ATP, if you remember the scale, so that the P can be transferred. The potential of transferring P should be high. In the case of oxidative phosphorylation, on the other hand, ATP is formed as a result of transfer of electrons to a chain. Okay, so we will see in a little more detail. I mean, here it does not really depict it. There's oxidation reduction reactions, of course. So there's an electron transport chain through which electrons are transferred, and molecules or moieties like NADH, FADH2, they are involved in transferring the electrons to ultimately a terminal electron acceptor, which could be oxygen or which could be nitrate, sulfate. There could be a variety of terminal electron acceptors. And during this process, you will have a proton gradient established. Now, when I say, I know you might not be getting it at this instance, but later we will see how this happens. And there is an ATP synthase, an enzyme which synthesizes ATP, which would then use the proton gradient. So basically, electron transfer से एक proton gradient create होता है, and उस proton gradient से the ATP synthase actually forms ATP. ठीक है? And it will be clearer in the coming slides. So just wait for a couple of minutes and you will understand what I mean by all this. So substrate level में easy है, P group transfer हो रहा है. इसमें एक chain of electron transport है जिसमें कि electrons sequentially move करते हैं and drive होता है ATP synthesis. ठीक है? Talking about, like I said, we're going to restrict ourselves only to catabolism. So we talked about how catabolism is important in a cell's life cycle. And catabolism, if you see, it can be divided into 3 stages. The first one is breakdown of complex molecules to simpler ones. So whether it is proteins, polysaccharides or fat, whatever the cell would have available, it will break it down into the monomers like amino acids, glucose and fatty acids and glycerol. Then the monomers, they are all channeled or funneled to a form that can be easily oxidized. So basically यहाँ oxidize करना है जिससे कि energy release हो रही है, हाँ? And the central molecule here that meets this purpose is acetyl CoA. तो तुम्हें ये broader picture हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग एक pathway cover करेंगे, इसमें ही pathways cover करेंगे हम लोग. And once acetyl CoA is formed, the third stage is where there is complete oxidation. So whether it is amino acid, glucose or fatty acid, they all form acetyl CoA, and then this enters into the stage 3, which involves primarily oxidation, complete oxidation, as well as generation of ATP. Now, we are not going to touch upon the stage 1, which is breakdown of polymers to monomers. We will concentrate on the other 2 stages, stage 2 and stage 3. Of course, जब हम तुम्हें ये बता रहे हैं तो ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि here we are talking about organic compounds being used up for energy generation, also to serve as carbon sources. So what we are talking of is heterotrophy. ठीक है, इतना तुम लोग को समझ में आ रहा होगा. And when we talk about the pathways, usually glucose is considered as the most common substrate for studying heterotrophic metabolism, but you have to understand कि बाकी भी sources से ये funnel हो सकता है इस process में. So we'll start with glucose and see how it ends up in generating ATP. Yeah. So in prokaryotes, energy is generated by either the process of respiration, which is a high ATP yielding process, or it is by fermentation, which is a low ATP yielding process. Okay, but still why a cell goes into fermentation, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे. Today I wish to cover respiration, that too aerobic respiration.
Now, how many of you consider anaerobic respiration to be a synonym to fermentation? अभी तक तुम लोग को पता है कि respiration anaerobic भी हो सकता है, या जब भी ऑक्सीजन नहीं होता है तो आप fermentation समझते हो उसको? Anybody? रेस्पिरेशन तो पता है ना क्या होता है? ह्यूमंस में रेस्पिरेशन क्या होता है? बोलो भाई। सत्यकाम सिंघल। Yes, ma'am. Ma'am, humans में respiration in sense मतलब मतलब oxidation of food from like this oxygen intake and removal of carbon कार्बन डाइऑक्साइड dioxide. बेसिकली यही होता है ना कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन की CO2 की तरह रिलीज होता है, एंड इन द प्रोसेस यू जनरेट एनर्जी, द सेल जनरेट्स एनर्जी, राइट? Yes, ma'am. है ना? Did you know of the process of anaerobic respiration also? Yes, ma'am. When the pyruvate formation takes place, it's mostly anaerobic respiration. नहीं नहीं, क्यों? क्या पाइरुवेट तो हमेशा फॉर्म होता है, इवन फर्मेंटेशन में फॉर्म होता है। Okay. है ना? हाँ, मुझे पता है कि ये कुछ कंफ्यूजन स्कूल टाइम से होता है स्टूडेंट्स को, जहाँ पे एनारोबिक, जैसे ही एनारोबिक कंडीशन होता है, पीपल से दैट स्टूडेंट्स आर अंडर द इम्प्रेशन दैट फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है? इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू कि ये पता है कि नहीं तुम लोग को फर्मेंटेशन इन सब में देयर इज अ कॉमनैलिटी, ठीक है? एक पर्टिकुलर स्टेप तक तीनों में होता है, whether it is aerobic or anaerobic respiration, or even if it's fermentation, you will see that there's a common pathway followed by all, and then the cell decides if it has to enter into respiration or fermentation, ठीक है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सिनोनिम नहीं है, ये पता है तुम लोग को? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. गुड। तो we will start, like I said, we will start with respiration, and we are supposed to cover everything. So aerobic, anaerobic, fermentation, हम लोग को ये सब cover करना है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ commonalities हैं, तो today I would like to take you through the aerobic process, and उसमें हम बताएंगे कि कहाँ पे difference है anaerobic में, and maybe tomorrow we'll talk about tomorrow मतलब next class में we'll talk about fermentation. Now respiration, जैसे तुमने मुझे बताया, takes place when any organic compound, usually it is carbohydrate, is oxidized, but मैंने तुम्हें बताया कि बाकी भी चीजें यूज हो सकती हैं मोनोमरिक फॉर्म में. It is oxidized completely to CO2 and H2O. In fact, this is where it differs from fermentation, in that in fermentation there is incomplete oxidation. This is also the reason why in terms of efficiency, energy efficiency, this is fermentation has lower ATP yield. Now in aerobic respiration, जो हम अभी आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बता रहे थे कि चेन ऑफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे कि इलेक्ट्रॉन सीक्वेंशियली ट्रांसफर होते हैं, एंड द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डिपेंडिंग ऑन द moiety which accepts the final electron, it could either be aerobic respiration, जहाँ पे O2 serves as a terminal electron acceptor, or it could be anything from nitrate, sulfate, even carbon dioxide. And if that is the condition, or even fumarate compounds like fumarate, if these are the terminal electron acceptor, then the respiration is termed as anaerobic respiration, wherein oxygen is not required. Yeah, so end result ये होता है कि there is complete oxidation of the organic substrate, and the products formed are primarily carbon dioxide and water. In some cases, for example, if proteins are used as substrate, then ammonia is also formed. Now, whether it is aerobic or anaerobic, like I said, there are going to be some common pathways. There are again 3 stages to respiration. We'll take up each of this. There can be the sequence of events is, there's first glycolysis. Glycolysis में basically lysis है, मतलब glucose का lysis है या sugars का lysis है, and there could be some other pathways involved, हम लोग इसकी बात करेंगे. So basically first stage में breakdown होता है, then it enters into a cycle called as Krebs या citric acid cycle, wherein oxidation होता है, oxidation to CO2. And finally electron transport, जहाँ पे की energy generation होता है. If I can bring you back to this cycle, this is what I'm talking about. ये lysis है, then it enters into the TCA cycle or the citric acid cycle, जहाँ पे CO2 evolve हो रहा है,
एंड थर्ड स्टेज में जिसको हम यहाँ कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, एटीपी जनरेट हो रहा है। बहुत क्लियर इन तीनों का पर्पस है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस क्यों हो रहा है। ये मैंने एक जनरल वो ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया, लेकिन हम लोग लास्ट में इसमें आएंगे कि ये कैसे यहाँ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। Yeah. So glycolysis, like I said, is breakdown of glucose. Lysis हो रहा है. This takes place in the cytoplasm. We'll concentrate only on prokaryotes, especially in bacteria. Okay. So several reactions might happen in, let's say, mitochondria or for other pathways, but we're not going to take those up. Only prokaryotes. We will first talk about one pathway in glycolysis, which is also the most common type of glycolysis, called as EMP pathway, that is Embden-Meyerhof-Paranas pathway. So इसमें होता क्या है कि in 10 steps, one molecule of glucose, ये तुम लोग को पता है 6 कार्बन ग्लूकोज कैसा है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये सब तो पता ही होना चाहिए तुम लोग को, इतना तो बेसिक्स तुमने किया हुआ है. So one molecule of glucose by glycolysis, in the process of glycolysis, is broken down to 2 molecules of pyruvate, and these, as you see, are 3 carbon compounds. ठीक है, this pyruvate is an aldehyde again. 3 carbon compounds है. वो aldehyde मतलब इसमें तुम दोनों चीज कीटो ग्रुप भी है, aldehyde भी है. So this is broken down. तो हम लोग को इस पूरे 10 steps में तुम्हें ये देखना है कि कैसे ये sequentially break करता है into 2-3 carbon compounds. And जैसा मैंने तुम्हें बोला, this is a process which is common in both aerobic and anaerobic microorganisms. So here oxygen is not required. You will not come across the requirement of oxygen in this pathway. And glycolysis. So we are going to talk about EMP pathway. This can be further, तो 5 reactions जो हम लोग को देखना है, this can be further divided into 2 phases. तो the first phase is called as, please मुझे stop करना कहीं पे भी अगर जल्दी लग रहा है जा रहे हैं तो. हाँ, और मुझे hands raise नहीं दिख रहे हैं, इसलिए पता नहीं मेरे उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसलिए आप मुझे खुद ही बोल दोगे, बीच में बोल देना जो भी क्वेश्चन है. So the first phase of the 5 reactions are called as investment phase or the preparatory phase. As the name suggests, here you would invest such that later you could extract some energy out of it, besides breaking up the 6 carbon compound into 2 pyruvate molecules, like I said. अब इसमें क्या होता है देखो, इस 5 में तुम्हें 5 steps में ग्लूकोज आइसोमराइज करता है, फ्रक्टोज बनता है, एंड देन इट इज द फ्रक्टोज विच एक्चुअली डिवाइड्स इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स. यही होता है इस पूरे फेज में. लेकिन कैसे? वंस ग्लूकोज एंटर्स द सेल, if you remember the transport processes, one of the transport process was group translocation, wherein I had mentioned that phosphorylation happens to be a common example of group translocation. And the role of phosphorylation of a moiety was to trap the substance. So for example, if glucose during the transport, if there is group translocation happening and it forms glucose 6-phosphate, it is trapped inside the cell. Okay. So glucose is converted to glucose 6-phosphate, and क्योंकि तुम enzymes पढ़ रहे हो, you know that the enzyme here would be a kinase. It's a hexokinase. So glucose to glucose 6-phosphate by the use of ATP. हम लोग investment phase कह रहे हैं, तो यहाँ पे ATP generate होने की बजाय ATP use up हो रहा है. Okay, 1 ATP is used up here. Then the idea is to destabilize it. 6 कार्बन को 3 कार्बन में ब्रेक करना है हम लोग को, बीच में से स्प्लिट करना है. तो the idea is to destabilize it. The next 2 steps are meant for this process. सबसे पहले क्या होता है, the glucose 6-phosphate isomerizes to fructose 6-phosphate, and of course the enzyme would be an isomerase, so it's phosphoglucoisomerase. And then there is another phosphorylation, so the second ATP molecule is utilized, and fructose 6-phosphate के बाद the other terminus is also phosphorylated. ठीक है?
fact this is the committing step to glucose to glycolysis. अब इसमें क्या हो रहा है? After this process, what you have is in this one moiety you have the two termini with bulky P's attached to it, and this makes it quite unstable. So in the next step, which is mediated by an aldolase, अगर तुम लोग को reverse aldol condensation याद हो अपने chemistry lectures से, तो this splits this highly unstable molecule to an aldehyde, which is glyceraldehyde 3-phosphate, and a ketone, which is dihydroxyacetone phosphate. ठीक है? This is a fructose bisphosphate aldolase. तुम लोग को पता होगा bis का मतलब क्या है? डाई क्यों नहीं है? bisphosphate क्यों है? ये पता है ना? ये सब टर्मिनोलॉजी तुम लोग ने पढ़ी है बायोकेमिस्ट्री में. जब हम कह रहे हैं आइसोमरेज, काइनेज, तो तुम लोग को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि तुम लोग एंजाइम्स पढ़े हो. गोपिका बताइए. विचंतन नहीं, गोपिका बोलो. ये सब पढ़ा है ना? काइनेज क्या करता है? सिंथेज और सिंथेटेज के बीच में डिफरेंस क्या है? ये सब पता है? पढ़ा है. विचंतन बोलो. Ma'am, I had a separate doubt regarding something else. नहीं, पहले मुझे यहाँ बताओ कि तुम लोगों ने ये सब पढ़ा है कि नहीं. व्हेन आई से हेक्सोकाइनेज तुमको इमीडिएटली स्ट्राइक कर रहा है ना? हाँ सत्यकम बताओ. बायोकेमिस्ट्री में ऐसे स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा है, बट कुछ कुछ ऐसे टर्म याद है, मतलब थोड़ी बहुत याद है बस. अच्छा, तो जब हम तुम्हें कह रहे हैं कि आइसोमरेज है, तो समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना कि तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन ही ड्राइव होगा, है ना? इतना तो क्लियर है. अब अगर हेक्सोकाइनेज है, मतलब इट्स अ काइनेज व्हिच इज एक्चुअली फॉस्फोरिलेटिंग अ हेक्सोज. इट्स क्लियर, राइट? इसमें तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें पता है कि हो क्या रहा है इसमें. हाँ, तो ठीक है. तो हम आई विल नॉट बी आस्किंग यू टू मेमोराइज दीज नेम्स, बट इट इज काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि तुम्हें अगर प्रोसेस पता है तो एंजाइम तुम्हें अपने आप, तुम इवन खुद भी नेम कर सकते हो. तो अगर तुम इसको ग्लूकोज काइनेज बोलोगे तो हम इसको कट नहीं कर सकते, रॉन्ग नहीं कर सकते तुम्हारे उसको, है ना? While it's a hexokinase, क्योंकि most of these hexoses can be phosphorylated, you can as well term it as glucose kinase. ठीक है? अगर general तुम्हें अपने समझने के लिए. हाँ, now Vishantan, you can ask me the question, whatever you had. Ma'am, my question was, since it's anyway getting converted to fructose after isomerization, so why doesn't this pathway simply start with fructose and just like disregard the intermediate steps? Disregard? Okay. तो ये ग्लूकोज यूजुअली तुम्हें ग्लूकोज सबस्ट्रेट इजीली अवेलेबल होता है. जैसे ही मोनोमर्स जो ब्रेक करते हैं, तुम्हें पता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इसलिए ग्लूकोज इज रेडली अवेलेबल. It is not that if fructose is not available, it can't enter. Of course, it can enter anywhere in the chain. ठीक है? तभी मैंने कहा because glucose is मेरा, अगर तुम्हें याद हो लास्ट स्लाइड में हम कह रहे थे कि it is the most commonly स्टडी भी करते हैं हेटेरोट्रॉफी से ग्लूकोज को, क्योंकि बहुत सारे मोनोमर्स ग्लूकोज ही होते हैं. अगर तुम्हें सेल्यूलोज वगैरह कुछ भी याद हो, अगर पॉलीमर्स याद है तो, है ना? I hope that answers your question. ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि इस प्रेपरेटरी फेज में कोई प्रॉब्लम है? इस इन्वेस्टमेंट, क्यों इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं, और इससे व्हाट डिड द सेल गेन? ये समझ में आया? व्हाट वाज द आइडिया फॉर दीज 5 स्टेप्स? चौधरी जयेश सतीश विल टेल मी. आर यू देयर जयेश? Sorry, can you repeat question? What I'm saying is, did you understand the idea of investment phase? Why did it happen, or what was the resultant? Yes, ma'am. Basically, we converted glucose in two or three carbon compounds. 2 और 3 कार्बन कंपाउंड्स? क्या बोल रहे हो? मतलब कि वो 2-3 कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है? हाँ. तो पूरे इन्वेस्टमेंट फेज में, और हम इन्वेस्टमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एटीपी यूज कर रहे हैं अभी. हमारा पूरा आइडिया ग्लाइकोलिसिस का है दैट वी विल गेट एनर्जी आउट ऑफ इट, लेकिन यहाँ पे हम इनफैक्ट वी आर यूजिंग अप द सेल्स एटीपी. So we can get the more ATPs in a former steps while later stages. In the later stages. है ना? तो यहाँ पे 2 एटीपी हमने यूज कर लिया, और अल्टीमेटली हुआ क्या? दैट वी हैव द फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट इनटू 2. एकदम सेंटर से ये स्प्लिट कर जाता है, जिससे कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होता है. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे. किसी को कोई डाउट है तो पूछो प्लीज अभी. जयेश, यू कैन म्यूट योरसेल्फ.
किसी को कोई और प्रॉब्लम है? हम लोग कहाँ पे हैं ये समझ में आ रहा है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू फॉर्म दिस सेंट्रल मॉलिक्यूल विच इज एसिटिल कोए। एंड ग्लूकोज से स्टार्ट किया। विशंतन ने पूछा क्यों ग्लूकोज से स्टार्ट किया, वो भी मैंने बताया कि फ्रक्टोज से भी कहीं से भी आप एंटर कर सकते हैं। द शुगर कैन एंटर इनटू द चेन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेज विच इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसके की 10 स्टेप्स हैं। ये 5 स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। 2 काइनेजेस क्योंकि 2 एटीपी यूज हुआ है, एक हेक्सोकाइनेज है, एक फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है क्योंकि फॉस्फोरिलेटेड फ्रक्टोज है जिसको कि फॉस्फोरिलेट कर रहे हैं। और हमने पर्पस बताया तुमको कि द फर्स्ट स्टेप इज बिकॉज यू वांट टू ट्रैप द ग्लूकोज वंस इट इज चार्ज। एक्चुअली पी जब आ जाता है तो इट कैन नॉट बी then transported back or out of the cell from the glucose permeases or the glucose transporters। तो ये कैप्चर किया हमने, then we isomerize it। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ज्यादा अनस्टेबल होगा, दोनों एंड्स पे पी ग्रुप इस पे फिर हम अटैच करते हैं and then it breaks into dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate। We talked about just 4 reactions. The 5th reaction is dihydroxyacetone phosphate can actually isomerize to glyceraldehyde 3 phosphate, and this is important because in the next steps it is only gap which can enter. Okay, so DHAP is isomerized to gap which continues to the next phase, that is the energy generation phase or the payoff phase. Okay, तो glyceraldehyde 3 फॉस्फेट उसको हम लोग गैप कहते हैं और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो हम यहाँ आपको बताते हैं उसको हम DHAP कहते हैं। The first step is mediated by a dehydrogenase, और dehydrogenase आपको पता है कि oxidation reduction reactions करता है। Now the aldehydes, they are known to have a very low redox potential, so the oxidation of glyceraldehyde is kind of very spontaneous. So by this oxidizing agent NAD plus, it can easily be oxidized to 1,3-bis-phosphoglycerate by also addition of this PI. You will see that again glyceraldehyde now has 2 phosphates. तो पहले glyceraldehyde 3 phosphate था और अब again इसके दोनों ends पे phosphorus है. So you have 1,3-bis-phosphoglycerate. Next step next step is in fact the first step in glycolysis which generates ATP. Okay, so in fact in this entire process you will see that ATP is generated in 2 steps in 2 of these reactions. The oxidation is so exergonic that it can be used to produce ATP. This is such a highly exergonic hydrolysis that here you have ADP being phosphorylated to ATP, and again the enzyme has to be a kinase. This time it's a glycerate kinase, phosphoglycerate kinase. So what results is a 3-phosphoglycerate. ठीक है? Now तुमको अगर लास्ट जो टेबल हमने कहा था तुम्हें याद रखने के लिए वो ये था, इसमें I asked you to remember these 2, phosphoenol pyruvate and 1,3-bis-phosphoglycerate. ये मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि जो सेकेंड फेज है ना, इनमें ये दोनों ही, ये देखो 1,3-bis-phosphoglycerate, it can form ATP because it has a higher P transfer potential, as well as phosphoenol pyruvate. ये दोनों इसके लिए मैंने कहा था तुम्हें याद रखने के लिए। हमें जो इन्वेस्ट हमने ATP किया है, we want it back and a gain of ATP, right? तो यहाँ पे 1,3-bis-phosphoglycerate has a higher potential of transferring P, तो उसने 3-phosphoglycerate, the product is 3-phosphoglycerate with phosphorylation of an ADP, and then further you have to, the cell has to form another moiety which has higher transferability, P transferability, compared to ADP in the scale. So 3-phosphoglycerate, it isomerizes to 2-phosphoglycerate. Basically सिर्फ rearrangement है 3rd carbon से 2nd carbon पे. And after this, so what is happening here is, again if you see, the negative charges are being brought together. ठीक है, destabilize कर रहा है again, it's trying to make it more reactive.
So after the formation of 2-phosphoglycerate, there is an enolase functioning with the dehydration of water to form a phosphoenol pyruvate, and it is this phosphoenol pyruvate which I mentioned to you again in the table that has a very high P transfer potential. So this formation of the double bond, it actually increases the potential energy in the remaining P bond, and due to this high transfer potential, the next step is again mediated by a kinase, and the second ADP is phosphorylated to form ATP. तो इन 5 रिएक्शंस में होता क्या है, ग्लीसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एक इनऑर्गेनिक पीआई के साथ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है, which like I said can generate an P to ADP. तो पहला ATP हमें यहाँ रिटर्न हुआ. 3 फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमराइजेस टू 2 फॉस्फो. उसके बाद इनोलेज से हमने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया जिससे कि this molecule is also high P transfer, and the second kinase acts. So ultimately you have the pyruvate which is formed, जो कि हमारा purpose था. So this is a 2-oxopropanoic acid. If you see 2-oxopropanoic acid. अब तुम मुझे बताओ इसमें से कोई चीज क्लियर नहीं है. तो बेसिकली हमारा नेट यील्ड क्या हुआ, 10 स्टेप्स में हमारे क्या यील्ड हुआ, कितना एटीपी जनरेट हुआ या नहीं जनरेट हुआ? Anybody? Bhavya? कहाँ हो? दीपक, जहांगीर? हाँ भव्या, चलनी. एटीपी तो एडीपी में कन्वर्ट हो. हाँ, तो यही तुम पूछ रहे हैं कि सेल के पास कितना एटीपी जनरेट हुआ इस प्रोसेस से. 10 स्टेप्स तुमने सुना जो मैंने बताया? यस. EMP पाथवे की बात कर रहे हैं हम लोग, which is a type of glycolysis, one type of glycolysis, जिसमें 10 स्टेप्स है. मैंने तुम्हें बताया कि इन्वेस्टमेंट फेज में 2 एटीपी यूज हो रहा है, लेकिन एटीपी जनरेट हो रहा है एनर्जी जनरेशन फेज या पे ऑफ फेज में. तो हम तुमसे कह रहे हैं 1 ग्लूकोज से कितना एटीपी जनरेट हुआ या नेट यील्ड 0 हो गया, क्या हुआ? बोलो. दीपक बताना चाहते हो तुम? मैम नेट यील्ड 0 होगा, बट आई हैड डाउट इन द 6th नहीं स्टेप दैट. नहीं, रुको, डाउट पे भी हम जा ही नहीं रहे. नेट यील्ड 0. किसी को कुछ और बोलना है इसमें? विशंतन, सत्यकम, गोपिका, कोई मुझे बताएगा नेट यील्ड 0 है? For now, it seems that the net yield is 0 because 2 बाबा, were consumed. 2 नहीं, नेट यील्ड 2 सत्यकम हुआ ना क्यों? सत्यकम बताओ. मैम, क्योंकि 2 बाहर है, Correct. मतलब मतलब कहाँ हो तुम लोग? बाकी सो रहे हो क्या तुम लोग? यहाँ पे 2 है ना, डाइहाइड्रोक्सी 1 ग्लाइकोलिसिस हैज ब्रोकन डाउन टू DHAP एंड ग्लिसरल्डिहाइड. तो ये 2 तुम लोग भूल जा रहे हो क्या? 2 गैप हो गया ना फिर. समझ में आ रहा है गोपिका? into 2 भी लिखा है आपने. है ना, into 2 है ना, तो यहाँ पे 4 जनरेट हुआ ना, तो नेट यील्ड 2 का हुआ. वरना हम एनर्जी जनरेशन क्यों कह रहे हैं, पे ऑफ फेज क्यों कह रहे हैं? विशंतन, क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. Now I'll come to your doubt, Satyakam. Give me a minute. I hope these 10 reactions, if you remember the philosophy of the process, that you're breaking down the 1 glucose into 2 3-carbon compounds, it is quite easy for you to first divide it into the first 5 reactions and the next 5 reactions. और हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, तो ट्रैप करने के लिए, फिर destabilize करने के लिए, then again in the payoff phase forming these 2 high energy P transfer molecule. This is the basic philosophy. तो तुम्हें बहुत इजीली सब कुछ सीक्वेंशली समझ में आएगा कि कोई चीज क्यों हो रही है. ठीक है. नाउ सत्यकम, कमिंग टू योर क्वेश्चन, बताओ क्या बोल रहे हो तुम? मैम उसका था शायद, तो मेरा नहीं था कोई डाउट. अच्छा, दीपक जहांगीर का था, राइट? हाँ दीपक बताओ. मैम इन 6th स्टेप व्हाट इज दिस PI, NAD++ PI? That is inorganic phosphate. It is not from organic form. The cell would have its own store of inorganic PI also. ओके. ठीक है. ये वो नहीं है जो कि तुमने देखा ना कि वो फॉस्फोरिलेट हो रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड से. ये वो नहीं है, जैसे ATP नहीं फॉस्फोरिलेट कर रहा है इसको. ये इनऑर्गेनिक PI है. ठीक है.
ओके मैम, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब पीआई मतलब फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक। ओके। Okay, so the overall reaction is of course ये तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये 2NAD प्लस लगा, ये कहाँ पे लगा था, कहाँ पे रिक्वायर किया था हम लोगों ने 2NAD प्लस स्टूडेंट्स। डिहाइड्रोजनेशन सिर्फ एक जगह हो रहा था, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase was converting it into 1,3-bis phosphoglycerate together with a PI being attached. Okay, तो 2NAD plus 2 ADP plus 2 PI and it's resulting into 2 NADH. तो net yield हमारे पास 2 ATP है। यहाँ पे ये भी important है that you understand कि NADH का भी आगे रोल है। हाँ, तो 1 glucose converted to 2 pyruvates. अब should I take up, हाँ ये तुमको बस बता देते हैं। यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं जहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, जो मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। I have just highlighted the 2 steps wherein you will see substrate level phosphorylation. So 1,3-bis phosphoglycerate converted to 3-phosphoglycerate by a kinase and phosphoenol pyruvate. This is the final step, phosphoenol pyruvate being converted to pyruvate again by a kinase. This is called as a pyruvate kinase. ठीक है? So this is these are the 2 steps involved, but this gives only a lower amount of ATP yield compared to oxidative phosphorylation. यहाँ पे सिर्फ we have got back whatever is the ATP. Now this is I've included a reference here because it actually explains to you the logic behind each step of glycolysis, okay, which you really don't see in most of the textbooks. So I thought anybody who's interested might go through this paper. So I will not take up the next steps. I will cover it in the next class. अभी तक कुछ doubt है तो please पूछो. Otherwise we'll close the class. So just a recap, we talked about what is metabolism, catabolism, anabolism, and catabolism हम आगे focus करेंगे इस पे. This I mentioned because I wanted to tell you that biological reactions में क्या क्या consider करना है. Then I gave you some assignment कि तुम मुझे next class में बताओगे कि why is it only ATP out of the other nucleotides, and also why is it ATP when there are many other. शायद तुम लोग को अभी तक आंसर समझ में आ गया हो इस क्वेश्चन का, I don't know. कि why is ATP the energy currency and not these higher P donors? कुछ समझ में आया है क्या? अभी तक वैसे आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने प्रोसेस बता दिया है तुम लोग को पूरा, बट ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग देख लो. देन आई टोल्ड यू कि एटीपी जनरेट कैसे होता है सबस्ट्रेट और ऑक्सीडेटिव से, जिसमें कि इसका ज्यादा बड़ा रोल है, ऑक्सीडेटिव का ज्यादा बड़ा रोल है. होता क्या है सबस्ट्रेट लेवल, ये तो एटलीस्ट अभी क्लियर हो जाना चाहिए. ऑक्सीडेटिव के लिए शायद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब समझेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस क्या होता है तो क्लियर होगा. बट सबस्ट्रेट लेवल में डायरेक्ट पी ट्रांसफर होता है, जो आपने अभी अभी ग्लाइकोलिसिस के पे ऑफ फेज में देखा भी. Then I said कि क्या stages है catabolism में, and that we will not cover stage 1. We will only concentrate on generating this common molecule called as acetyl-CoA that enters into the stage 3 and generates energy, और carbon dioxide कैसे release होता है oxidation से. All these processes are going to be taken up, whether it is respiration and fermentation. I also told you that there's a difference between anaerobic respiration and fermentation. ठीक है, इसकी details हम लोग next class में देखेंगे कि कैसे ये दोनों different है. I started with respiration जो कि high ATP yield करता है, and till now we've covered a common step. So both aerobic and anaerobic would include glycolysis, Krebs cycle, electron transport मतलब breakdown, oxidation, and then energy generation. And glycolysis में I told you कि what is the main motive here, glucose splitting into 2 pyruvate. इसमें मैंने तुम्हें explain किया first 5 reactions, which is wherein we invest energy, and payoff phase wherein we get back. So there's a net gain after this this set of reactions, and this is the overall reaction. अब कोई question है तो please पूछो मेरे से. तो next class में we will start with the next step. So how does it enter into the Krebs cycle is where we start from. मैम ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है मैम, इसमें इसी की वजह से बाकी यूनिट्स नहीं यूज होती क्या एटीपी की जगह, क्योंकि एडीपी में कन्वर्ट होना होता है तो मे बी जो बाकी फॉस्फेट्स हैं वो मतलब
ऐसे कुछ? हाँ, ऐसा कुछ तो है सत्यकम लेकिन हम अभी नहीं बताना चाहते सत्यकम. आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू स्टडी. जितने लोग एटलीस्ट हो प्लीज खुद देखो. मतलब मेरे लिए बहुत इजी है बता देना कि हाँ ये रीजन है, लेकिन आई वुड रियली वांट यू टू स्टडी. ऑफ कोर्स इट हैज टू डू विद दिस स्लाइड. ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की अगर आप ये स्लाइड देख रहे हो तो जो मैंने पूछा था, नॉट अबाउट विच न्यूक्लियोटाइड, विच ट्राइफॉस्फेट. ओके, I'm talking about why just ATP and not the other high energy compounds. उसके आंसर के लिए this slide is actually sufficient. तुम थोड़ा सा तुम लोग प्लीज देखोगे. हाँ, नेक्स्ट क्लास में we will start with, it will take us 2 minutes to see कि तुम लोगों ने क्या देखा, नेट पे क्या मिला आप लोग को, बुक्स में क्या मिला, and then we'll move forward. ठीक है सत्यकम? Anybody else has a Yes. doubt? ठीक है, if not then we will end the, and they're now on Tuesday. Okay, students, bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye, Ashi.